Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel DigiLearnersPoint. आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जिसका कोड ECO404 है उसके असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इसकी लास्ट डेट आज है यानी 2 दिसंबर 2022। इसका टोटल मार्क्स 15 है। चले हम केस को रीड आउट करते हैं, समझते हैं, फिर उसके साथ जो रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स है उसको रीड आउट करके उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। Wateen Telecom Limited is Pakistan's largest fiber optic network. It provides connectivity services to individuals as well as organizations all over the Pakistan. Wateen Telecom Limited delivers complete solutions for internet, voice multimedia and enterprise solutions that make it the most comprehensive provider for all of Pakistan's communications necessities. Wateen Telecom aim is to make Pakistan regional communication hub through digital revolution of the 21st century and to connect East with West and Central Asia with Middle East. Suppose profit function of Wateen Telecom is this symbol is stand for profit is equal to 70m minus 3m square minus mn minus 2n square plus 62n, which is also known as objective function, whereas the constraint is m plus n is equal to 16. Services capacity constraint. अब हम रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं. Keeping in view the above data, calculate the value of m, n and lambda by using a Lagrangian method. Calculate profit of Wateen Telecom Limited by using values calculated in part A. You are also required to interpret the value of lambda w. अच्छा, इम्पोर्टेंट क्या है, आज इसकी लास्ट डेट है लेकिन आपके पास 24 आवर्स एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड टाइम है, यानी एक दिन का जो कि आपको मिला है लोड शेडिंग की प्रॉब्लम की वजह से। तो आप लेकिन आप कोशिश कीजिएगा आप उसको आज ही अपलोड कर दें। तो हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं कि हमारा सोल्यूशन है ये जो हमें प्रॉफिट फंक्शन दिया गया है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, हमने उसको इक्वेशन 1 का नाम दिया है। तो सर्विसेज कैपेसिटी कंस्ट्रेंट इज इक्वल टू या कोलन m प्लस n इज इक्वल टू 16। सेट कंस्ट्रेंट्स इक्वल टू 0, जो हमें ये कंस्ट्रेंट दिया गया हम उसको 0 को इक्वल करते हैं। 16 माइनस m माइनस n इक्वल टू 0 बाय अप्लाइंग लैग्रेंजियन फंक्शन L इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्लस लैम्डा इनटू कंस्ट्रेंट। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 70m माइनस 3m स्क्वायर माइनस mn माइनस 2n स्क्वायर प्लस 62n प्लस लैम्डा पैरेंथेसिस स्टार 16 माइनस m माइनस n। इसको हमने क्वेश्चन 3 का नाम दिया है। अप्लाइंग पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू m n and lambda ऑन क्वेश्चन 3। ये पार्शियल डेरिवेटिव का सिंबल है पार्शियल l और पार्शियल m। 70 माइनस 2 into 3 6m minus m becomes 1 n minus 0 plus 0 because there is no m here and no m here plus lambda. This n becomes equal to 0 and this m becomes equal to minus 1 is equal to 0. So 70 minus 60m minus n plus 15 lambda is equal to 0. We call it equation 4. By mistake I have written it here 3. Please you correct it. Now partial lambda divided by partial n is equal to 0 minus m minus 4n plus 62n, because look at this function, we are going to differentiate partially with respect to n, so no n is here, so it is 0 minus n minus 4n and plus 62. By rearranging it, minus m minus 4n plus 62 plus 15 lambda is equal to 0. This is equation 5. So now this time we are going to differentiate this equation 3 with respect to lambda. So all becomes 0 except the constraint function with 1 16 minus m minus n, and 16 minus m minus n is equal to 0. This is equation 6. Now from equation 6 we get
n is equal to 16 minus m. We labeled it at equation 7. So now equation 6 into, put equation 6 into equation 3, which is equation 4 here. So 70 minus 6m minus 16 minus m plus 15 lambda is equal to 0. 70 minus 6m minus 16 plus m plus 15 lambda is equal to 0. 54. 70 minus 16 54 minus 5m plus 15 lambda is equal to 0. Solve for lambda. Lambda is equal to 5m minus 54 by 15. Called it equation 8. Now put equation 6 into equation 4, which is basically 5 minus m minus 4 16 minus m plus 62 plus 15 lambda is equal to 0 minus m minus 64 plus minus plus 4m plus 62 plus 15 lambda is equal to 0. 4m minus m is equal to 3m minus 2. From here I will get this 2. Yes. Minus 64 plus 62 is equal to minus 2 plus 15 lambda is equal to 0. Solving for lambda, lambda is equal to 2 minus 3m over 15. This is equation 9. By equating right side of the equation 9, 8 and 9 we will get, because the left hand side of this equation and left hand side of this equation are same, so we can equate both the equations. 5m minus 54 by 15 is equal to 2 minus 3m by 15. 15 is denominator is same on the both sides, so it will cancel it with each other. 5m plus 3m is equal to 2 plus 54. So what happened, I will bring this 3m on right hand side, it sign turns into positive plus 3m, and this minus 54 on the right side, and also its sign becomes positive. 8m is equal to 56, m is equal to 56 divided by 8, m is equal to 7. Now we have the value of 7. Now put this value into equation 7. We will get n is equal to 16 minus 7, n is equal to 9. Now we have values of 7 and n. Now we need to find the value of lambda. Now insert the values of m and n into 7, 8 or 9 equations. Lambda is equal to 5, 7 minus 15. Lambda is equal to 2 minus 3 into 7, 15, 15. 35 minus 54, 15, and 2 minus 21 divided by 15 minus 19 by 15 minus 19 by 15, both are same. So minus 1.27, this is our required value in decimals, not in fractions. Now come to the part 2 where we have to find the value of the profit. Plug in values of m and in equation 1. We will get 70 into 7 minus 3 into 7 square minus 9 into 7 mn minus 2 9 square plus 62 9. 490 minus 147 minus 63 minus 162 plus 558 10 48 minus 372. Profit is equal to 676. Now here is the last question. This is about the interpretation of lambda. The value of lambda tells us about the marginal effect on objective function, either is a profit or cost related as a result of 1 unit change in constraint requirement. Here 1 unit change in services capacity constraint function will result in profit by 1.27, but in reverse direction, because हमारे पास जो वैल्यूज आई थी लैम्डा की वो -1.27, इसलिए उसके अपोजिट में जाएगा. अगर वो अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ. इफ कैपेसिटी सर्विस कैपेसिटी कंस्ट्रेंट फंक्शन जो है वो 16 से 17 की तरफ मूव करता है, यानी अपवर्ड की तरफ करता है, इंक्रीज करता है, तो प्रॉफिट क्या होगा, वो इंक्रीज नहीं करेगा उस नेगेटिव साइन की वजह से, वो डिक्रीज करेगा किससे 1/27 यूनिट से, एंड वाइस वर्सा. उम्मीद करता हूँ आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा. आखिर में एक और रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कहीं आप कोई कैलकुलेशन में या ये इसमें कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक देखें तो काइंडली उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो सके. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अस्सलाम वालेकुम.